हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग आप लोग का अच्छा चल रहा है। नाउ टुडे इज द फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक। सो ऑलमोस्ट जो अपॉर्चुनिटीज या ट्रेड हम लोग किए हैं ओवर द वीक, अब उसको देखना चाहिए कितना पोर्शन होल्ड करना चाहिए, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, अगर कुछ खराब गया है, क्यों गया है। सो वी दिस इज मोर ऑफ अ फ्राइडे जो रहता है टू टेक अ लुक बैक एट द होल वीक, व्हाट यू हैव डन ब्रॉडली। So let's start with this is about commodity markets. Commodity market के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. So first हम लोग commodity index को देखेंगे और ये जो देखेंगे ये हम लोग देखेंगे via my fountain of gold setup. आप लोग जानती हैं जो लोग यूजर हैं. ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस सेटअप या टाइमिंग टूल जो भी बोलेंगे, इसके साथ मैं फंडामेंटल मैक्रो एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस भी करता हूँ. नाउ दिस इज द यहाँ पे जाएंगे, जाके आई क्रिएट द फाउंटेन ऑफ गोल्ड बाय एसडी रेनबो वर्जन 1 एंड एसडी आरएसआई एक्स. तो वर्जन 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, उसमें मुझे चाहिए कमोडिटी वाला सेटअप. आई नीड कमोडिटी सेटअप, सो सिलेक्ट कमोडिटीज और नीचे मुझे चाहिए आरएसआई एक्स रेगुलर सेटअप. सो दिस विल क्रिएट अ 12 फैक्टर फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप. ये रहा. आई थिंक ये थोड़ा काफी स्क्रीन बड़ा है, इसीलिए नहीं आएगा. लेट मी मेक इट अ बिट स्मॉलर या नॉर्मल, तब जाके ये स्क्रीन में फिट हो जाएगा. लैपटॉप है तो आई थिंक दिस इज या अब बेटर है. सो रीडिंग अगर आप नहीं देख पा रहे, डोंट वरी, आई विल टेल यू अबाउट द रीडिंग. आप चार्ट जरूर देख पा रहे हैं, आई एम श्योर. तो हम लोग कमोडिटी मार्केट के अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, और सिंस बहुत लोग आप लोग पॉसिबल है कि ये चार्ट उतना नहीं जानते, इसके साथ हम लोग लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा. लाइन चार्ट चाहे तो ओवरलैप कर सकते हैं या इसको हाइड ही रखेंगे अभी के लिए. सो फर्स्ट मैं देखूंगा GSCI which is will be a representative of 24 global commodities. सो उनमें एक बाई सिग्नल के बाद स्ट्रगल, मुझे वार्निंग था कि आउटसाइड क्रॉस, आउटसाइड कैंडल बॉडी, रेड कैंडल, green candle, fight is going on broadly. So commodities, the bearish trend has taken a definite pause. I'm not fully ready, prepared to go bullish in commodity as a whole, but some compartment of commodity have been bullish और already हमें काफी बढ़िया रन दिया है, काफी स्ट्रगल भी दिया है, which is natural because जब हम लोग रिवर्सल प्ले कर रहे हैं क्विक रहना पड़ता है फॉर द एग्जिट, क्योंकि स्विंग होगा, सप्लाई रहेगा, देयर विल बी शार्प फॉल्स एज वेल. सो जो अपॉर्चुनिटी मिला है बाद में चला भी गया है, बट अभी तक दिस इज द यूएनजी. आई डोंट थिंक ये दिस इज ओवर. दिस इज द बुल ट्रेंड, इट हैज पोटेंशियल. बट कैस क्या किया है इसने, एक बार कैंडल से देखी, इट टच द एम्प्टी लाइन. एम्प्टी लाइन जब कोई भी रिवर्सल होता है मेरे फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप में, फर्स्ट टारगेट बिकम्स द एम्प्टी लाइन. After touching the empty line, we are likely to see a correction. That correction, many cases, will not mean कि ये फिर से sell off हो रहा. It is a very natural correction. So अगर correction यहाँ से sell off हो रहा है, that is very very natural. Now if you look at इस मामले में, this is natural gas का exchange traded fund. So if I go to MCX energy natural gas, you'll see it is also taking resistance from some important area. Definitely it has not yet touched the empty line, whereas international अगर देखें तो NG1 और international natural gas exactly touch the empty line, and कोई देखेगा तो it also created a shooting star. So many times this can be a like this, a rounding bottom breakout, then that will be very bearish. अभी तक ऐसा कोई साइन नहीं आया है इन नेचुरल गैस कैसा फॉर्मेशन आने वाला है, बट इट कैन कम कि एक राउंडिंग होके फिर गिरे. नाउ यहाँ पे जो हम लोग नेचुरल गैस बाय कर रहे हैं, सो ये हमें क्विक
प्रॉफिट लेना होगा पार्शियली विच इट हिट हियर, तो आप प्रॉफिट ले लिए, अगर आप नहीं लिए अभी भी आप ले सकते हैं. इट वॉज अ वेरी अर्ली सिग्नल. If we look at, it was a very early signal. This was the, अभी भी हम लोग मार्जिनल ब्रेक इवन के ऊपर है. NG1, if you look at natural gas here, from this buy date, we are still much higher. This day, इस डे का क्लोजिंग भी लेंगे तो भी हम लोग हायर है. What we can do or what we should do, the way we approach is partially profit book when you get to the empty line. Okay. And now your next break, which is very important, now you wait for the break of the empty line to add up on the quantity. Remaining quantity you hold with maximum stop loss or background turning red or background turning yellow. You can wait for these signals for remaining exit. और ये सारे अलर्ट जो हैं, जो लोग यूजर्स हैं, आप जानते हैं सारे अलर्ट्स आर अवेलेबल हियर. जो भी अलर्ट्स आपको चाहिए, दोज आर ऑल आर अवेलेबल. So natural gas is still not a significant turnaround towards sell. It is a pause in the buying. और buy trendy अभी तक my fountain of gold is suggesting to me I remain some position long. It's all about managing this position is risk management in positional trading. Now, after natural gas, we are going to take a look at other जो bullish opportunity मिले थे, but now जिस तरह हमें volatility मिला, some of the bullish opportunities के बाद we got volatility. Like crude oil, the way it is moving, it has a lot of volatility. Crude oil is currently more of a wait and watch, but this is potential opportunity क्योंकि इतना बड़ा flat line है which is support. जितना लंबा flat line उतना ही stronger support या resistance. And crude oil इसको break किया and still sustaining above this level. So I'll see how low it comes. If it comes too low, based on risk reward, I might go for some entry, but largely that will be a tracking quantity, but largely I'll wait for a full green candle, जिसका alert once again आप यहाँ पे जाके price action bullish डालेंगे तो alert आ जाएगा. तो आते, that will be my point of entry. अभी भी over leverage position hold करना ठीक नहीं रहेगा. This is a good chance to square off. But partial position holding I'll prefer because of this flat line, very strong support. Similar is gold. गोल्ड का भी देखिए सिमिलर ही था, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी था. जो लोग जानते हैं दिस स्ट्रक्चर, आप यहां पे नहीं, गोल्ड मिनी पे देख पाएंगे. गोल्ड मिनी पे आइए. और रिसेंटली बंधुओं मैं ये ऐसे मार्केट गाइडेंस वीडियो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक, इंपॉर्टेंट फीडबैक that some of my old Rainbow Learn to Use videos need to do revamp, my redoing. So I'll be doing lot of videos regarding this Rainbow Learn to Use series ka. So regular possibly this market guidance nahi kar payenge, but group mein jo hamare group hai Rainbow, I'll continue to do there. But on a regular basis, market based video ke bina I'll focus on other things. So gold mini जो दिख रहा है मुझे, ये देखिए कल एक डाउन मूव. दिस वाज द फर्स्ट साइन ऑफ मोमेंटम लॉस. कैन बी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, but looking it coming from the empty line, it was a good sign that yeah, you better do some square off. So I had to do some square off in gold. Now I will wait patiently. I'll hold no position because the background is yellow and it's a reversal. I don't have, none of the trend is with me.
I just played with the green, small position. Now I'm in square off mode. And I'll wait and watch for these levels to get out, gold to get more and more strong. And more importantly, let me get a short trend bullish alert. Then only I'll be ready to go into gold. Silver is giving lot of volatility, but कल जैसे इतना बड़ा था, but we'll have to ignore जो मैं ignore करूंगा क्योंकि मेरे टाइम के फ्रेम के हिसाब से जस्ट आज एक ग्रीन कैंडल मिल रहा है, but today I'm not ready. This too small green candle, इसका कोई value नहीं है. I need more confirming signal. Yeah, I think silver will continue to form a base like this move, and it can go continue to make a more base. So I will more important कभी कभी ट्रेडिंग करने से ज्यादा ट्रेडिंग ना करे, तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज द टाइम टू रिड्यूस क्वांटिटी. इसके बारे में मैं जल्दी बात करने वाला हूं इन माय वोलेटिलिटी इन्फेक्शन वीडियो. So when those times are come, you'll have to reduce your quantity, play safely, जितना आप safe खेल सकते हो. So is gold silver is more of a neutral mood ही दिख रहा है. Gold was a good opportunity to get some gain, but those who entered early largely were in marginal loss or break even. In such a case, gold, it will be good idea to still exit even if you are in a marginal loss. Marginal, because anyway this was a contra trend trade against the main trend, against majority of the trend, and with this red candle, this is not a good holding. So if you want to still want to wait for the short term momentum, if it turns bearish, that will be a definitely signal you start better to do exit. So it's not always that we'll be making profit, but it is important that when we are making loss, then we cut it short. We do the risk management step and we start cutting it short. Like aluminium. Aluminium currently jo participation, it has to be done with smaller quantity. बढ़ रहा है aluminium. Aluminium is in a riding mode. If you look at it, it touched the empty line. Touched the empty line. If there was a spike, so aluminium is strong. But उससे भी बढ़िया strong है zinc. A beautiful move. Zinc is the one that is more stronger. Largely हम लोग को previous day का ही move मिल रहा है. जब India was closed, last day international was bullish in some counters. But important, यही मैं crude का इंतजार कर रहा हूँ. Look at the comeback. This is a strong level. 254 को बार बार respect दे रहा है. This is our Q. ये strong counter है, and this can go big. We don't need lot of trade. We need focus on few ones. This is a strong. ये जो some position I had squared off. This is my cue to be aggressive again and add more. And if I look at the important is line chart, not the. This is a beautiful break. Zinc looks awesome. This should be the minimum stop loss should be 255. But I think this is where I'll give. First one, okay, I got a yellow, I partially exited. This was, but now I got a confirmation. My theory is going good. So I'll go long. This is my actually I'll remain long. I will not go long. I'll remain long. I've added more quantity on it. As it's beautifully breaking, my theory is proving I don't need to wait for the closing of the candle. Sometimes my जो लोग मेरे क्लास के आप जानते हैं, always we need not wait, but definitely as a beginner you should wait for the candle close. But I'm not a beginner. So anyway, this is aluminium. This is, let's look at quickly the copper. Copper has given a buy signal. Yesterday night मैंने इसके बारे में पोस्ट किया था. ये जो buy signal आपको दिखेगा, rather LME लंदन मेटल एक्सचेंज का जो प्राइसेस है, वो प्राइसेस में दिख जाएगा buy signal. या तो ये रहा buy signal, but very early, very early, बहुत ही early buy signal है. So this was a signal, not a signal largely to jump into MCX long futures, which you can, but I prefer to start with some ETFs and see how it goes, and then I can build up. And when the phase is really strong, then only I can add the future contract and get the cream profit or the cream move out. I don't need to have to test
from the very beginning. So yesterday was actually trade starting day. So now this is copper. We have looked at gold, silver, I think natural gas, crude oil. I think broadly we have covered everything. So what I'm currently I'm interested in crude oil, wait and watch, looking for similar like zinc sort of opportunity. I'm more focused on zinc. Aluminium is bullish, but not as bullish as zinc. So small position can be kept in aluminium. It has reached empty line. Expect a correction. Copper is base building, so I'm starting with copper, early phase. Silver is also giving green candle, but I'm not yet ready to go into silver. It can go bullish from here, but I'm not yet ready. Rather, gold was much a better position, but currently gold, silver off. Natural gas, I'm remain bullish, but not that aggressive. I've squared off, I'll wait. But there are different ways like UNG, I'm long on UNG. I'm long on BOIL. BOIL is also natural gas ka long position. So I'm long on BOIL. I'm long on UNG. MCX I have squared off. Now I'll wait further to tonight how evening ko kaise hota hai natural gas and kaise hota hai ye ETFs ke behavior. Us basis pe I'll decide what to do. So ye rahe broad outlook. I hope you have enjoyed this video. अगर आपको help हुआ है, don't forget to like the video. All the best from my side, and as always, happy trading.